welcome all of you, my dear brothers and sisters, in this series of book discussion organized by SIO of India. हमें बहुत ही खुशी है, सादत है. We are very lucky to have a great book and its author for discussion today. तो आज का हमारे डिस्कशन की जो किताब है वो मुस्लिम वीमेन स्पीक ऑफ ड्रीम्स एंड शैकल्स, जिस किताब की ऑथर प्रोफेसर गजाला जमील हमारे साथ जो है वो शरीक हैं. तो अब बिना वक्त गुजारे की ये किताब दोस्तों, जस्ट टू गिव द रीज़न कि क्यों इस किताब को हम यहाँ पे डिस्कशन के मौजू बना रहे हैं इन वेरी ब्रीफ. किताब दरअसल बहुत ही अहम मौजू पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लिखी हुई किताब है. मुस्लिम वीमेन के ताल्लुक से या वीमेन एम्पावरमेंट के ताल्लुक से या वीमेन इमेंसिपेशन के ताल्लुक से मुख्तलिफ नौइयत के काम होते रहे हैं और हो रहे हैं. लेकिन इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में गजाला जमील की किताब अपनी एक इनफरादियत रखती है. इट्स यूनिक इन मेनी वेज. तो उस हवाले से इस किताब का डिस्कशन जो है वो हम लोगों के लिए बहुत ही मुफीद और नफा बख्श होगा. तो मुस्लिम वीमेन स्पीक ऑफ ड्रीम्स एंड शैकल्स, ये इस हवाले से भी बहुत अहम है कि फेमिनिज्म की जो पूरी तहरीक है और जिस तहरीक में मुख्तलिफ किस्म की ज़्यादतियाँ और मुख्तलिफ किस्म की सिंपलिसिटीज़ जिसको कह सकते हैं, उसका मुशाहदा देखने को मिलता है. दूसरी तरफ जो पूरा वीमेन एम्पावरमेंट का जो डिस्कोर्स है, जो पूरा लिटरेचर है, पूरी कोशिशें हैं, उसमें एक तरफ एलीट का एक प्रॉब्लम है इस सेंस में कि जो बहुत से लोग जब वो गुफ्तगू करते हैं वीमेन एम्पावरमेंट की, तो वो जो कम्युनिटी का जो एलिमेंट है, जो उनका अपना बैकग्राउंड है, रिलीजन है मिसाल के तौर पे, तो उस हवाले से उनको बड़ी हद तक अपना पीछा छुड़ाना पड़ता है. इस किस्म के मुख्तलिफ वो रीजंस हैं, वो बैकग्राउंड है जिस पे गजाला जमील ने मबाहिस छेड़े हैं, उस पर क्वेश्चंस उठाए हैं, उसके नुआंस को उठाया है, उसको एलॉबरेट किया है और वीमेन के हवाले से जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है सोसाइटी की, इंडियन सोसाइटी की, उस पर रोशनी डाली है. तो इस हवाले से हम ये समझते हैं कि ये किताब इस बात की मुस्तहिक है और इस कदर अहम है कि इस पे डिस्कशन हम लोगों को करना चाहिए. हमें खुशी है कि इस पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ 4 लोग जो है वो जुड़ चुके हैं. एक स्पीकर हमारी रहमतुन्निसा बाजी हैं, जो जमात इस्लामी हिंद की नेशनल सेक्रेटरी हैं और मजलिस शूरा की रुकन भी हैं. इसी तरीके से हमारे साथ इस डिस्कशन में हेबा अहमद हैं, जो JNU की रिसर्च स्कॉलर हैं. हमारे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर परवेज आलम साहब हैं और इसी तरीके से मुसब काजी भी हमारे साथ इस डिस्कशन में ज्वाइन होंगे. मुसब काजी जो है वो SIO के नेशनल सेक्रेटरी हैं. तो अब हम बिला ताखिर इस डिस्कशन को शुरू करने के लिए सबसे पहले दावत देते हैं अपने दोस्त मुसब काजी साहब को कि वो इस किताब के ओवरव्यू पेश करें और इस किताब पे अपने कमेंट के साथ इस डिस्कशन का आगाज करें. इसका फॉर्मेट ये होगा, इसको दोबारा से रिमाइंड कर दें, इसका फॉर्मेट ये होगा कि हम बारी बारी 4 स्पीकर्स को मद्दू करेंगे. वी विल इनवाइट ऑल ऑफ दिस 4 ग्रेट स्पीकर्स टू डिस्कस द बुक, टू गिव देयर कमेंट्स, देयर रिमार्क्स ऑन द बुक. और उसके बाद फाइनली वी विल इनवाइट रिक्वेस्ट अवर ग्रेट ऑथर गजाला जमील, प्रोफेसर गजाला जमील, टू रिस्पॉन्ड टू द कमेंट्स एंड गिव हर ऑन रिमार्क्स. तो अब हम मुसब काजी साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो स्टार्ट करें प्लीज. तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि आज का जो हमारा ये जो बुक डिस्कशन का सेशन है ये शुरू हो रहा है और छठा जो है हमारा ये सेशन है जिसमें हम लोग कोशिश ये करते हैं इस चीज़ की कि हम लोग इस चीज़ की कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छी बुक्स सेलेक्ट की जाएं जो टॉपिकल भी हो और ख़ास तौर से जो है जिसमें कुछ हमको जो है नई चीज़ें सीखने के लिए भी मिलें. और हमारी कोशिश ये होती है कि हम बुक के साथ में जो है बुक के जो ऑथर हैं
उनको भी इनवाइट करें, खुद हमारी जो समझ है उसको जो है चेक करें, ऑथर ने क्या ये किया है, इस बुक के जरिए से जो है कहने की कोशिश की है, और ओवरऑल ये जो प्रोसेस है, पूरा जो लर्निंग प्रोसेस है, इसके जरिए से जो है एक इल्मी और फिक्री जो है हमारा डेवलपमेंट हो, इर्तका हो, इस चीज़ की जो है ये कोशिश होती है। और जाहिर सी बात है, हमारी कोशिश ये भी रहती है कि सिर्फ वो बुक्स या वो आइडियाज या वो वर्क डिस्कस ना हो जिनसे हम ऑलरेडी अग्री करते हैं, बल्कि ये कि एक डिबेट की स्पेस रखते हुए जो है हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ आइडियाज सामने आए। और उस सिलसिले में ये जो आज की किताब खासतौर से सेलेक्ट की गई है, मुस्लिम विमेन स्पीक, जो डॉक्टर गजाला जमील साहबा की एक ये कहना चाहिए कि काफ़ी रिमार्केबल रिसर्च वर्क है, वो आज हमारे पेश नज़र है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि जो वक्त दिया गया है उसमें बुक का जो है एक बेसिक तारुफ, एक इंट्रोडक्शन पेश किया जाए, और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कमेंट्स तो नहीं, लेकिन कुछ सवालात ज़रूर पूछने की कोशिश करूंगा इस डिस्कशन के दौरान। So to begin with, as the name suggests, Muslim women speak. It might occur to us that it's a book about, it's a study of Muslim women, as the title suggests, of their dreams and their shackles. But it is as much a study of Muslim women in India as it is a study of Muslim women, or lack thereof. यानी कहने का मतलब ये है कि जितना मुस्लिम विमेन पर इस बुक में आपको रिसर्च मिलेगा, उससे ज्यादा अब तक की जो रिसर्च हुई है मुस्लिम विमेन पे और मुस्लिम औरतों पर, उसके ताल्लुक से एक बहुत जबरदस्त क्रिटिक हमको जो है इस किताब में देखने के लिए मिलता है। और अगर आप देखेंगे कि किताब को जो है ऑथर ने लगभग 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला जो हिस्सा है वो इसी लिटरेचर रिव्यू या लिटरेचर स्टडी पर मबनी है, कि जिसमें जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है मुस्लिम औरतों के ताल्लुक से उसका जायजा लिया गया है। जो बीच का हिस्सा है उसमें इस बात की कोशिश की गई है कि मुख्तलिफ ये कहना चाहिए कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो यंग मुस्लिम वेमेन है उनकी स्टडी की जाए, और ख़ासतौर से 2-3 एस्पेक्ट्स हैं उससे उनकी स्टडी की जाए। एक तो ये कि व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस एंड व्हाट आर देयर ड्रीम्स एंड व्हाट आर दी ऑब्स्टिकल्स दे फेस इन अचीविंग दोज ड्रीम्स एंड दोज ऑब्स्टिकल्स। तो एक चीज वो है ऑब्वियसली। दूसरा ये कि कम्युनल वायलेंस का इम्पैक्ट क्या हुआ है मुस्लिम वेमेन पे ओवर द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री, सो टू से रिसेंट पास्ट खास तौर से। और तीसरा और उसमें ऑथर ने इस चीज की भी कोशिश की है कि किस तरीके से जो है ये कहना चाहिए कि उसको इंटरप्रेट करने की एक कोशिश की गई है। और तीसरा हिस्सा ये है कि जिसमें बिल्कुल जो रॉ ये कहना चाहिए कि स्टडी की फाइंडिंग्स हैं वो पेश की गई है, उसको ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन रखा गया है कि इसमें जो है कुछ ये भी हो सकता है कि ऑथर का जो इंटरप्रिटेशन है आप इससे कुछ मुख्तलिफ, कुछ हटकर भी अगर चीज़ें डिड्यूस करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से जो है किताब हमारे सामने है। तो जो बेसिक प्रेमाइस है किताब का और वो ये है कि मुस्लिम्स का और खासतौर से मुस्लिम औरतों का जो रिप्रेजेंटेशन हमको एकेडमिक लिटरेचर में मिलता है और इवन जो पॉपुलर कल्चर में मिलता है, जो उनका रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली इट itself nullifies their representation or the purpose of the representation। यानी ये कि उनकी सही नुमाइंदगी होती मुस्लिम औरतों की, बजाय इसके हो ये रहा है कि उनकी नुमाइंदगी ही नहीं हो रही है, उनका रिप्रेजेंटेशन ही जो है सही से हो नहीं रहा है। और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हमको ये चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यू नो बीइंग पार्ट ऑफ और बीइंग एसोसिएटेड विद इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, ये तो एक ऐसी चीज है जिसको लेकर जो है हम अक्सर बात करते रहते हैं, हम अक्सर बोलते रहते हैं। एक चीज जो ऑथर ने बुक के अंदर में खास तौर से लिखी है कि द बेसिक प्रेमाइस ऑफ ऑल काइंड ऑफ स्टडीज दैट आर डन ऑन मुस्लिम women is that Muslims are communal until they are proven otherwise, and Hindus are sort of secular
until proven otherwise। तो कहीं ना कहीं ये मैक्सिम को सामने रखकर जो है जो भी रिसर्च है वो हो रही है। तो इस चीज को यहाँ पर जो है सामने पेश किया गया है। और इसकी क्या वजह है, तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह जो ऑथर ने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है अपनी बुक में, वो ये है कि इंडिया में जो खास तौर से फेमिनिस्ट मूवमेंट है, जो औरतों के हुकूक की बात करती है, औरतों की आज़ादी की बात करती है, और कहीं ना कहीं समाज में बराबरी की बात करती है, वो जिस तरीके से इंडिया में ओवरऑल एक मार्क्सिस्ट मूवमेंट रही है, जो कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए कि वो डोमिनेट की है, जो अपर कास्ट है उसने उसको डोमिनेट किया है। तो उसका जो पूरा डिस्कोर्स है उसमें कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए कि उनका एक्सपीरियंस जो है या उनकी जो प्रायोरिटीज है, या ये कहना चाहिए कि वो जिस तरीके से समाज को देखते हैं और जिस तरीके से समाज में बराबरी की कोशिश करते हैं, वो चीजें जो है इसके अंदर में झलकती हैं। तो ऑथर के मुताबिक जो है ये शायद जो है सबसे बड़ा मसला है। वो लिखती हैं यहाँ पर कि feminist movement in India is directed by constitutionalism, and hence it benefits the state, and it's marginalizing of who are marginalized, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो ओबीसीज हो। और कहीं ना कहीं ये जो एक कहना चाहिए कि ये एक बहुत ज्यादा जो सेक्युलर अप्रोच ये कहना चाहिए कि फेमिनिस्ट मूवमेंट ने जो इंडिया में रखा है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी जो है जो मुस्लिम औरतों को जो स्टडी करने की, उन पर जो रिसर्च करने की जो कोशिश होती है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका रिप्रेजेंटेशन सही तौर पर हो नहीं पाता है। ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो इंडिया में फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसकी जो पॉलिटिक्स है, इट्स अ पॉलिटिक्स ऑफ लाइफस्टाइल इंस्टेड ऑफ मोर सब्सटेंशियल क्वेश्चंस एंड मोर सब्सटेंशियल इश्यूज that face women in this society। जैसे उसका एक एग्जांपल जो ये है कि आप देखते हैं कि जो कम्युनल राइट्स होते हैं खास तौर से, और उसमें जो वायलेंस मुसलमानों के अगेंस्ट में होता है, उसमें खास तौर से जो है मुस्लिम औरतें निशाना बनती हैं, और उन पर जो है एक उनके साथ में जो सेक्सुअल वायलेंस किया जाता है, ये कहीं ना कहीं जो इंडिया में फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसकी प्रायोरिटी नहीं रहा है। और उसकी वजह यह है कि फेमिनिस्ट मूवमेंट की शायद सोच ये है कि अगर इस तरीके से जो है हम फेमिनिस्ट मूवमेंट में, विद इन फेमिनिस्ट मूवमेंट और विद इन विमेन, अगर हम इस तरीके से डिस्टिंग्विश करते रहें कि ये दलित औरतें हैं, ये उनका एक्सपीरियंस है, और ये मुस्लिम औरतें हैं, ये उनका एक्सपीरियंस है, और उस पर सेपरेटली बात की जाए और उनके कंसर्न्स को सेपरेटली रखा जाए, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है वो मुतासिर होती है, और कहीं ना कहीं वो फेमिनिस्ट मूवमेंट उसकी वजह से कमजोर होती है। तो बजाय इसके कि इस तरीके से एक डिस्टिंक्शन रखा जाए, खासतौर से हम देखते हैं कि जो ओवरऑल जो ये कहना चाहिए कि फेमिनिस्ट मूवमेंट है, फेमिनिज्म का जो लिटरेचर है, उसमें इंटरसेक्शनैलिटी की जो है बहुत ज्यादा अहमियत आ गई है कि फेमिनिज्म को जो है अपने आप में ये कहना चाहिए कि औरतों के हुकूक या औरतों की लड़ाई को जो है आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता बाकी सोसाइटी में, या सोसाइटी के अंदर में जो बाकी किस्म का मार्जिनलाइजेशन या बाकी जो जुल्म हो रहा है उससे कोई अलग थलग करके चीज नहीं देखी जा सकती, बल्कि आपको जो ओवरऑल सोसाइटी में ये कहना चाहिए कि मार्जिनलाइजेशन लोगों का हो रहा है, आपको जो है उसके साथ में मिलाकर देखना होगा। तो ये एक इंटरसेक्शनैलिटी की बात ये कहना चाहिए कि पूरी दुनिया में आजकल फेमिनिस्ट मूवमेंट को लेकर हो रही है, लेकिन ये कहना चाहिए कि इंडिया में इस चीज को लेकर अभी भी जो है उतना प्रोग्रेस नहीं हुआ है कि जितना होना चाहिए। और यही वजह है कि खास तौर से गुजरात फसादात के बाद में जब औरतों पर बहुत ज्यादा जुल्म हुआ, मुसलमान औरतों पर, और मुस्लिम जो फेमिनिस्ट औरतें थी उन्होंने जो है इसके खिलाफ आवाज उठाई, और वो ये चाह रही थी कि जो दीगर फेमिनिस्ट थे वो भी इस पर बोलें, और कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस मिला उस चीज को लेकर। तो उसकी वजह से जो है एक ये कहना चाहिए कि एक नया स्टैंड ऑफ फेमिनिज्म जो है इंडिया के अंदर में वजूद में आया, जो जिसका एक बड़ा जो ये कहना चाहिए कि जो एक बड़ा ग्रुप जो काम कर रहा है, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन, वो उसका एक मजहर है। और ये जो स्टडी जो कंडक्ट की है मुस्लिम विमेन स्पीक, ये इनके जरिए से ही जो है कंडक्ट कराई गई थी। तो यहाँ पर ये कहना चाहिए कि खास तौर से ये जो पूरी स्टडी कंडक्ट की गई है,
इसमें ऑथर ने कहीं ना कहीं वो खुद लिखती हैं कि एक कोशिश ये नहीं है कि जो मुस्लिम समाज जो है या मुस्लिम औरतों का जो समाज है उसकी कोई एग्जैक्ट रेप्लिका यहाँ पर क्रिएट की जाए, बल्कि इन्होंने जो है एक अगेंस्ट द ग्रेन अप्रोच यहाँ पर अपनाया है। अगेंस्ट द ग्रेन यानी जो एग्जिस्टिंग, ये कहना चाहिए कि लिटरेचर है या जो एग्जिस्टिंग अजम्पशन या जो एग्जिस्टिंग डिस्कोर्स है, हम उसके जानबूझकर जो है उसके अगेंस्ट में जाकर या उसके, ये कहना चाहिए कि कॉन्ट्रेरियन, पर्पसली कॉन्ट्रेरियन अप्रोच जो है अडॉप्ट करें, कि जो चीजें यहाँ पर सामने आई है अभी तक के जो लिटरेचर में, क्या हम उसके खिलाफ या उसके ये कहना चाहिए कि उससे हटकर कुछ चीजें पर बात कर सकते हैं क्या, उससे हटकर कोई अप्रोच हम ले सकते हैं क्या। तो जो कुछ अजम्पशंस इस रिसर्च के दौरान में लिए गए, एक चीज जो बड़ी हद तक के आमतौर पे कहा जाता है कि मुस्लिम औरतें जो है उनकी कोई वॉइस नहीं है, दे डोंट हैव अ वॉइस ऑफ देयर ओन। लेकिन यहाँ पर उस चीज को चैलेंज किया गया है, उस अजम्पशन को, और उसके खिलाफ जो चीज यहाँ पर हाइपोथेसाइज की गई है वो ये कि मुस्लिम विमेन हैव अ वॉइस, दे विल फाइंड अ वॉइस if a willing ear is lent to them, if a sympathetic and willing ear is lent to them, कि अगर उनकी बात सुनी जाएगी तो उनकी आवाज, ये कहना चाहिए कि सुनी जाएगी, उनकी आवाज सामने आएगी। तो शायद हो ये रहा है कि उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही और ये कहा जा रहा है कि वो बोलती नहीं है या उनकी कोई एजेंसी नहीं है। तो यहाँ पर ये हाइपोथेसाइज किया गया है कि उनकी भी एजेंसी है शायद, और वो भी विक्टिम्स नहीं है, सिर्फ महज विक्टिम नहीं है, चाहे वो एक सोसाइटी में जो पेट्रियार्किकल वायलेंस है, जो ये कहना चाहिए कि मर्दों के जरिए से जुल्म होता है उसका भी, और कम्युनल वायलेंस का, उसकी भी वो सिर्फ विक्टिम्स नहीं है, उनकी अपनी एक एजेंसी है। वो भी जो है अपने तौर पर जो उनके हालात है, जो उनका कॉन्टेक्स्ट है, उसको सामने रखते हुए जो है वो भी इस बात की कोशिश करती है कि किस तरीके से जो उन पर जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ जो है वो आगे बढ़े, इस चीज की जो है वो कोशिश करते हैं। तो ये एक अजम्पशन लेकर ये स्टडी कंडक्ट की गई है। फिर एक चीज जिस पर यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश की गई है कि वायलेंस का इम्पैक्ट जो है सोसाइटी पर क्या होता है वो समझा जाए, और ये कि व्हाट आर द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ मुस्लिम वुमेन, कि ये समझने की बजाय या ये अज्यूम करने की बजाय कि उनका अपनी कोई सोच या उनके अपने कोई ख्वाब या एस्पिरेशंस नहीं है, इस चीज पर जो है कॉन्शियसली पता करने की ये चीज कोशिश की गई कि व्हाट आर देयर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस डिस्पाइट द शैकल्स that they are in this society। तो ये एक कोशिश की गई। यहाँ पर एक सवाल जो मैं उठाना चाहता हूँ कि what is the merit of having this purposely contrarian approach, मतलब कि हम जानबूझकर ये क्यों कहें, मतलब हम ये चीज कह रहे हैं कि भाई जाहिर सी बात है कि जो एग्जिस्टिंग स्टडी हुई है उसके बहुत ज्यादा ये कहना चाहिए कि लिमिटेशंस रहे हैं और बहुत सारी जो उसकी फाइंडिंग्स है वो प्रॉब्लमेटिक है, तो हम जो है उसकी सिर्फ मुखालिफत में एक स्टडी करना चाहते हैं, ये अप्रोच कितना सही है। और ये जो अजम्पशंस लिए गए हैं कि नहीं उनकी वाकई एजेंसी है और अब हम उनकी एजेंसी कैसे है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो क्या ये अप्रोच सही है क्या एक रिसर्च वर्क के लिए, कि हम जो है ये मालूम करने की कोशिश करें और ये साबित करने की कोशिश करें कि नहीं उनकी एजेंसी है या उनकी वॉइस है, ये अप्रोच कहां तक सही है और इसके पीछे क्या मेरिट है। अगर ये चीज थोड़ी सी सामने आए तो और ज्यादा बेहतर होगा। तो फिर जैसे कि मैं बताया कि किताब का जो पहला हिस्सा है खासतौर से जिसमें लिटरेचर सर्वे किया गया है, जिसमें लिटरेचर स्टडी की गई है, उसमें तीन चीजों को या तीन एस्पेक्ट्स को जो है प्रॉब्लमेटाइज किया गया है, उसको क्रिटिक किया गया है, उस पर तनकीद की गई है। तीन एस्पेक्ट्स क्या है? पहला एस्पेक्ट तो जो है खुद सब्जेक्ट्स यानी जिसकी स्टडी की जा रही है, चाहे वो मुस्लिम्स इन जनरल हो या मुस्लिम औरतें जो है स्पेसिफिकली, उस पर। सेकंड जो है कि जो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की गई है अब तक के रिसर्च करने के लिए, क्या तरीका अडॉप्ट किया गया है, उस पर तनकीद की गई है, उसको प्रॉब्लमेटाइज किया गया है। और तीसरी और एक अहम चीज यह है कि रिसर्च कौन कर रहा है, जो रिसर्चर है इसको भी जो है प्रॉब्लमेटाइज करने की कोशिश की गई है। इस पर भी जो सवालात उठाए गए हैं कि कौन रिसर्च कर रहा है और किस चीज को सामने रखकर वो रिसर्च कर रहा है, ये चीज भी जो है अहमियत इख्तियार करती है। तो अगर पहला जो इसका एस्पेक्ट देखा जाए कि खासतौर से मुस्लिम औरतें जो सब्जेक्ट्स हैं
उन पर जब रिसर्च की गई तो उसके क्या लेक्यूना रहे हैं, उस पर ये कहना चाहिए कि क्या उसके इश्यूज रहे हैं, सबसे पहले जो है इस पर बात की गई है। तो जो मौजूदा जो डिस्कोर्स है खास तौर से, और जिसमें उसमें मुसलमानों को और खास तौर से मुस्लिम विमेन को जो स्टडी किया गया है, उसके जो ये कहना चाहिए कि जो लिमिटेशंस रहे हैं वो खास तौर से ये रहे कि फॉर एग्जांपल जब कम्युनल वायलेंस को स्टडी किया गया है, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी को जो इंडिया में स्टडी किया गया है, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट रहा है स्टडी का वो कम्युनल वायलेंस रहा है। तो हम ये देखते हैं कि जो लिटरेचर है उसमें कम्युनल वायलेंस को लेकर जो है बहुत ज्यादा ये कहना चाहिए कि उसको रिकॉर्ड किया गया है बहुत डिलीजेंटली, जो है जो इस तरह के वाकयात हुए हैं, चाहे फसादात हो, राइट्स हो, इन तमाम को जो है नोट किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको थियराइज करने की कोशिश नहीं की गई है कि क्या वजूहात हैं और इसका क्या इम्पैक्ट जो है मुस्लिम सोसाइटी पर पड़ता है। अगर थियराइज किया भी गया है, खासतौर से आजकल हम देखते हैं जो इनका नाम आता है, क्रिस्टोफर जेफरले का जो नाम आता है, उसमें भी जो है जो हिंदुत्ववादी लोग जो हैं, जो परपेट्रेटर्स हैं, वही प्रोटेगनिस्ट है, यानी इनकी स्टडी की गई है। लेकिन जो खुद विक्टिम्स हैं मुस्लिम्स, वो हाशिए पर नजर आते हैं कि इन पर इसका क्या इम्पैक्ट हो गया है, इसकी जो है बहुत ज्यादा हमको जो है स्टडी नहीं मिलती है। और इसका नुकसान ये है कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो पहले हम बात कर रहे थे कि जो एक इंटरसेक्शनल अप्रोच होना चाहिए वो मुतासिर होता है। और जिस तरीके से ऑथर ने जो है अपने बुक में डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है कि किस तरीके से कम्युनल वायलेंस का अपना एक रोल है जो खासतौर से मुस्लिम औरतें हैं उनके ओवरऑल जिंदगियों पर जो पड़ता है, तो वो एक चीज है। फिर खास तौर से एक जो बड़ा मसला, सबसे बड़ा मसला रहा है, और अक्सर हम भी जो है इसको लेकर जो है बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं और बहुत ज्यादा इस पर सवाल उठाते हैं कि जो मुसलमानों की ओवरऑल जो कंडीशन है और खासतौर से मुस्लिम औरतों की, उसको बेसिकली ब्लेम कर दिया जाता है उनके रिलीजन पर, उनके फेथ पर। और खास तौर से मुस्लिम औरतें हैं, ये कहा जाता है कि भाई मुस्लिम औरतें जो हैं वो पर्दा लेती हैं, और चूंकि वो पर्दा लेती हैं तो वो बड़ी सबमिसिव किस्म की होती है, और ये कहना चाहिए कि उनको कहीं ना कहीं घरों में और बाहर समाज में भी जो है एक दूसरा दर्जा दिया जाता है। लेकिन इसके अंदर में बड़ा मसला ये रहा है रिसर्च में कि ये जो अजम्पशन या ये जो कंक्लूजन जिस पे रिसर्चर्स पहुंचे हैं, क्या इसके पीछे कोई ठोस वजह है, या फिर जो है ये एक सेल्फ फुलफिलिंग किस्म की प्रोफेसी है, यानी ये एक अज्यूम कर लिया गया है कि हाँ मुस्लिम औरतें जो है उनकी रिलीजन की वजह से, पर्दे की वजह से जो है पीछे है। और फिर यही चीज जो है बार बार बोली गई, बार बार बोली गई, और इस चीज का जब इतना इरादा किया गया तो वो चीज जो है कहीं ना कहीं एक ये कहना चाहिए कि इसका हिस्सा बन गई कि हाँ ये चीज अब तय है कि मुस्लिम औरतें जो है इसी की वजह से जो है पसमानदा है। और ऐसे में ये किया गया कि बजाय इसके कि मुस्लिम औरतों से खुद पूछा जाता कि उनके कंडीशन के ताल्लुक से, रिसर्चर्स ने उनको इनविजिबलाइज कर दिया कि खुद वो बोलें अपने ताल्लुक से कि क्या वजूहात हैं जो उनकी कंडीशन है उसके। तो उन वजूहात को जानने की बजाय जो है अपने तौर पर जो है वो वजूहात जो है कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए कि अस्क्राइब कर दी गई। Conclude in 2 minutes, please, Musab. श्योर 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 श्योर। और आखिरी जो चीज जो ऑथर कहती हैं कि जो सबसे बड़ा मसला ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी को एसेंशियलाइज कर दिया गया है, यानी कहीं ना कहीं जो पूरी जो मुस्लिम सोसाइटी है उसको एक होमोजेनस ये कहना चाहिए मोनोलिथिक ग्रुप की शक्ल में पेश किया गया है, जिसके लिए सिर्फ उसका रिलीजन एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, और वो एक एंटी लिबरल कॉम है और कहीं ना कहीं जो तरक्की की दौड़ है इसके अंदर में पीछे रह गई है। और यहाँ पर खास तौर से जो है उन्होंने एडवर्ड सईद की और उनकी जो ये कहना चाहिए कि ओरिएंटलिज्म की का जो पूरा काम है, और फिर उसके बाद में जो फुकुयामा और हंटिंगटन का जो काम है उसको साइड करके बताया गया है कि किस तरीके से जब वेस्ट में ये कहना चाहिए कि अरब दुनिया को और मुसलमानों को एसेंशियलाइज किया गया, एक ये कहना चाहिए कि एक राक्षस की सूरत में जो है, एक ये कहना चाहिए कि एक एग्जॉटिक कॉम की सूरत में जो है उनको पेश किया गया। तो यहाँ पर जो है उसी का परतो जो है कहीं ना कहीं उसको हमको इंडिया की जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसमें जो है दिखाई देता है। तो यहाँ की जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसकी कोशिश यही रही कि जो पाथ है चेंज का वो उसी वक्त हो सकता है कि जब मुस्लिम औरतें अपना जो रिलीजन है या फेथ जो है उसको शन करें, और जो ये सेक्युलर पाथ है उसके जरिए से जो रिफॉर्म की कोशिश करें।
और उसके मुकाबले में फिर ये बात आई कि नहीं, बहुत सारे जो मुस्लिम फेमिनिस्ट हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे कि भाई हम अपने रिलीजन के बाहर इसका सोल्यूशन देखेंगे, हम विद इन रिलीजन देखेंगे, जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसको रीरीड करेंगे, उसको रीइंटरप्रेट करेंगे, और कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए कि उससे जो है मौजूदा जमाने के मुतालिक जो है कुछ मीनिंग्स अक्स करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर एक बड़ा सवाल मेरा है कि ये ऑथर ये जब बताती हैं कि जिस तरीके से इंडिया में फेमिनिस्ट मूवमेंट के अंदर में ये जो दो स्टैंड्स ऑफ थॉट जो हैं अब जो पाए जा रहे हैं, एक ये जो ट्रेडिशनल ये है कि भाई आप एक सेक्युलर पाथ इसके लिए अपनाएं, रिलीजन को और आपके जो भी ये कहना चाहिए कि कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं उसको आप शन करते हुए जो है एक कॉमन जो मेथड है रिफॉर्म का आप उसकी तरफ जाएं, और उसके मुकाबले में ये जो खासतौर से मुस्लिम फेमिनिस्ट ने सामने रखा और दीगर भी ये जो इंटरसेक्शनल फेमिनिस्ट हैं उनकी तरफ से आई कि नहीं भाई, हो सकता है कि ये जो रिफॉर्म का पाथ है ये विद इन रिलीजन आए, शायद उसके लिए हमको जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसको रीरीड करना पड़े, रीइंटरप्रेट करना पड़े। तो यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि क्या इसके पीछे कोई ठोस वजह है या जस्ट ये एक टेक्टिकल मूव है, या एक ये कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक यूटिलिटेरियन अप्रोच है कि भाई शायद अगर हम रिलीजन के जरिए से रिफॉर्म लाने की कोशिश करें तो ज्यादा एक्सेप्टेबल रहेगा, कोई और तरीके से करेंगे तो नहीं होगा। तो इसकी वजह क्या है? और उसमें दूसरा बड़ा सवाल ये है कि अक्सर जो खासतौर से खतरा हमको लगा रहता है, जो कोट अनकोट जो इस्लामिस्ट मूवमेंट्स हैं या जो जिनके लिए रेफरेंस पॉइंट इस्लाम है, वो ये कि आप इस चीज में हाउ डू यू अवॉइड अस्क्राइबिंग अ मीनिंग टू द टेक्स्ट। मतलब ये चीज तो अच्छी है कि आप रिलीजन को जो है री इंटरप्रेट करें, रीड करें, इज्तिहाद करें, लेकिन अगर आपका जो पाथ है और आपका जो गोल है वो प्री ऑर्डेंड है पहले से ही, तो इस बात का बड़ा खतरा लगा रहता है कि आप कहीं ना कहीं उसको अपने मानी पहनाने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज को जो है किस तरीके से जो है अवॉइड किया जा सकता है? तो ये मेरे ख्याल से एक ये कहना चाहिए कि सबसे बड़ा हिस्सा ये कहना चाहिए कि किताब का है। और उसमें जाहिर सी बात है जो दूसरी जो बहस की गई है वो मेथोडोलॉजी पर की गई है कि अब तक की जो रिसर्च हुई है उसमें 1 मिनट प्लीज। जी 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 उसके अंदर में जो दो बड़े मसले रहे हैं जिसको ऑथर बताती हैं कि वो पॉजिटिविज्म का और एम्पिरिसिज्म का है, कि यानी जो चीजें जिनको हम टेंजिबली नाप सकते हैं उसके जरिए से ही जो है औरतों की और मुसलमानों की प्रोग्रेस को नापा गया है, खासतौर से सचर कमेटी वगैरह की जब हम बात करते हैं। और उसके मुकाबले में एक अगर नैरेटिव अप्रोच अडॉप्ट किया जाता जिसमें मुस्लिम औरतों को बोलने का मौका दिया जाता और उनके जरिए से ही समझने का मौका दिया जाता, तो शायद एक बेहतर पिक्चर जो है कहीं ना कहीं सामने आती। और तीसरी और अहम चीज जिस पर बात की गई है वो ये है कि रिसर्चर कौन है, क्या इस चीज का भी जो है रिसर्च में कोई मतलब या कोई माना होता है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल ये जो स्टडी है मुस्लिम औरतों की, इसको एक मुस्लिम औरत ये स्टडी कर रही है, इसकी जो है ये कहना चाहिए कि जो सब्जेक्टिविटी है इस चीज को कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अभी तक की लिटरेचर में कोशिश ये की गई है और ये चाहा गया है कि जो रिसर्चर है वो अपनी सब्जेक्टिविटी को खत्म करके एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच इख्तियार करे, जो कि किसी सूरत पॉसिबल नहीं है, जो कि एक विशफुल थिंकिंग है, लेकिन उसी के सहारे जो अभी तक के चला गया है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये कहना चाहिए कि इस तरीके से पूरा जो मुस्लिम औरतों पर जो लिटरेचर है उसको एक क्रिटिक किया गया है। इस बात का मौका तो नहीं है कि अब हम जो है जो एक्चुअल रिसर्च की गई है उस पर स्टडी करें, लेकिन मेरी जाती राय ये है कि इवन जो एक्चुअल स्टडी की गई है उसमें भी शायद जो रिसर्चर है और जो गजाला जमील साहबा हैं उनकी कोशिश ये है कि बजाय ये कि रिसर्च ही असल है, इस चीज पर जो है शायद तवज्जो दी गई है कि क्या एक हम टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं जिसको अगेंस्ट द ग्रेन उन्होंने कहा है कि ये जो पूरे मसाइल है उसके बरखिलाफ क्या रिसर्च का हम कोई नया पैटर्न जो है बना सकते हैं। तो शायद ये कोशिश और ये प्रायोरिटी बजाय खुद रिसर्च अज खुद रिसर्च के क्या वो टेम्पलेट क्रिएट हो सकता है, मेरे ख्याल से इस पर जो है बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है। तो ये कुछ बिखरे हुए ख्यालात थे किताब को लेकर और एक जो उसका ओवरव्यू है यहाँ पर मैं पेश करने की कोशिश की गई। शायद 15 से 20 मिनट में पूरी किताब का अहाता तो नहीं हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो सबसे ज्यादा पाथ ब्रेकिंग चीज है इस पूरी किताब की वो सामने लाने की मैंने कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुसब साहब। तो अब इसके बाद हम अगले स्पीकर मोहतरमा हिबा अहमद को दावत देंगे कि वो इस किताब पे अपने रिमार्क्स, अपने व्यूज शेयर करें हमारे साथ। हिबा अहमद बहुत ही मशहूर है हम तमाम लोगों के लिए, एक बड़ी एकेडमिशियन है, बड़ी एक्टिविस्ट हैं।
तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि वो हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन हो चुकी हैं। प्लीज हिबा अहमद। So thank you for inviting me and for this opportunity. I'll begin my talk with revisiting some of the themes in the chapter, though it has been covered in great detail by the previous speaker. But there are a few things which I wanted to discuss from the chapter on discursive colonization, because this chapter lays out in very great detail the broad themes or broad tropes in which Muslims talked about, in which Muslim women are talked about. And according to the author very rightly argues that any discussion about Muslim women in India by the colonial discourse of India, where any aspiration, and I'm quoting from the book, the colonial discourse whence any aspiration or expression of a different identity by Muslims has been branded as Muslim communalism or minority communalism. And the author also goes on to argue that even though Muslim women are targeted in specific forms of communal violence or sexualized violence during periods of anti-Muslim violence, it is the truth that I'm quoting, the truth is that a more deep-seated prejudiced view is prevalent, which has to do more with a broader range of discrimination. And the author even says very rightly that this fact of a broader range of discrimination, this is ignored by most of the authors who write on Muslim women. Another thing which the author points out is the experience of Muslim women, the testimonies of Muslim women as faced during everyday discrimination, as well as during sexualized violence during anti-Muslim pogroms. That subjective narratives is missing. She cites a few exceptions also in this work. Another theme on which she has talked about very rightly is how the Muslim social movies from the 1950s and 1960s, they have tried to essentialize a certain image of the Muslim woman, like the image of the Muslim woman is always segregated or cloistered in the parda, and that she is restricted within the zinana. And she even cites specific movies like Chaudhry Ka Chand, Mere Mehboob, etc., which show this very essentialized and a very singular image of the Muslim woman. And of course, that movie Nikah, which actually shows the whole idea of instant triple talaq in a very crude manner. So she quotes another very important book by Professor Mahua Sarkar, and the author quotes Mahua Sarkar in saying that the problem is not just that the existing scholarship privileges Hindu women and ignores Muslim women, but rather that it typically fails to register Muslim women's invisibility. So, so this theme of invisibilizing Muslim women or talking about Muslim women in very restrictive, very stereotypical ways is a constant theme in which the author has written about, which the author tries to explore. The author tries to explore these myths, these stereotypes of writing about Muslim women. She tries to explore the singular category within which most authors have tried to, it's like a pigeonhole in which most authors have tried to fit Muslim women into. So another important thing which she talks about is that how, so even when Muslim women have been written about, they are always written about that they are victimized or oppressed by Muslim men, even though there are very few studies actually of Muslim men or Muslim masculinity. So this generalization and this claim has been made in a very grandiose manner that Muslim women are oppressed by their own religion and their own communities, but it has never been, critiqued, or even studies of Muslim masculinity has been ignored to show whether there is actually any merit in making these very tall generalizations. And she points out to this Muslim women survey, which not many of us may know about. I didn't know about the Muslim women survey, which was conducted in 2006 by Zoya Hassan and Ritu Menon, which is a quantitative study of the socio-political, socio-economic conditions of Muslim women. And so these are the basic themes in which the author has tried to elaborate the discourse around Muslim women, especially in academia.
And she points out very rightly, I'm quoting, the left liberals as well as the Hindu right converge and chastise Muslims for being irrational and anti-liberal. And I think this is a very important theme to be highlighted. Having said that, I'll make this point that when I was first invited to come and speak for this event, it was in the beginning of January. And then we could not have foreseen the recent developments which are taking place in Karnataka, and from Karnataka in different parts of India, about the compulsory, the hijab ban which is being imposed, and the way in which Muslim women are being deliberately and forcefully unveiled in public. So it will be remiss of me to not make any mention of that while discussing this book. So having said that, I would like to also make a slight counterposition from this book and from most narratives of Muslim women. This alternative narrative about Muslim women, which is being written now, especially by Muslim women, most Muslim women only are writing that everyone is trying to save Muslim women. Everyone is trying to save Muslim women by portraying the fact that Muslim women are oppressed and victimized by the men of their own community. My point of difference with this analysis is that that is not the only alternative. That is not the only motive of the Indian state. You can prove Muslim women to be, basically, there can never be a limit to how much we can prove ourselves to be liberated. Even the most liberated hijab-clad Muslim woman in India, who has shown herself to be, liberated from the community vis-a-vis Muslim men, vis-a-vis her religion, even she will be portrayed as victimized, and she will be portrayed as oppressed by the community. So we need to broaden our argument. We need to show how talking about Muslim women as not needed to be saved, we don't need to save Muslim women, how this discourse can help us to critique that Hindutva gaze of the Indian state, especially as it is unfolding today, but which has, it has its precedence in Indian history and Indian politics. So that is my slight difference with this work, that it is not just enough to show that Muslim women do not need saving. It is not just enough to show that Muslim women are located in the everyday contexts of dreams and aspirations. We also need to show how these dreams and aspirations can actually give a challenge to the post-colonial Hindutva gaze of the Indian nation state, because that is exactly what is happening now. The everyday aspiration of the Muslim girl to go to school, the everyday, very ordinary aspiration of the Muslim teacher to go and teach in her school, the way it has been oppressed, the way it has been pushed back or negated by the Indian state is something which needs special analysis. Also, my slight distinction with this work is that often it happens that the author writes in this chapter on discursive colonialism is that the case of Muslim women in India is all the more precarious because they have to negotiate with the anti-Islam posturing as well as with the rigid patriarchal stances and structures from within the community, both of which may well present themselves on many occasions as intertwined. I think, of course, this perspective needs a little bit of updating because there is no symmetry between the rigid patriarchal stances and structures from within the community and from the anti-Islam positions of the Indian state, because the latter, namely the anti-Muslim stances of the Indian state, have magnified themselves to such an extent that that is what merits our analysis. That is what we should be talking about more now. Because, and here again, I would like to point out this in complete agreement with the author, that we need not frame the debate about speaking about Muslim women from the way the left wing chastises, and I use this word from the author because she uses it very well, about the way the left wing or the left liberals or the progressive intellectuals, they chastise Muslims for being anti-liberal. So I think it's a game which we have lost beforehand. We cannot go on proving that, okay, no, we are liberal. So it's a game which has been stacked against us from the beginning itself. So, but of course, the progressive intellectuals have
dominated anti-fascist analyses, anti-fascist critiques of the Indian state. So with this book in mind, with the way the author has argued for a Muslim subjectivity, I was wondering if we can carry this project further and talk about a certain critique of the Indian state, a certain critique of the Hindutva gaze on the Muslim woman, which takes into account the Muslimness of the Muslim woman, the fact that the Muslim girls, Muslim teachers, I mean, the idea of the Muslim woman, that the way she fights the Indian state, even though she didn't ask for it. But the way she is having to fight with the Indian state is because the extraordinary ways in which the Indian state is oppressing Muslim women, the extraordinary ways in which the Indian state is intruding upon the everyday lived realities of Muslim women, be it just entering your school, be it sitting in your classroom amidst your non-Muslim classmates. The chapter on the everyday of inhabiting margins was something which is I think this is an extremely important chapter which the author writes about how the everydayness of what it is to be a marginalized community and what it is to belong to a marginalized community. And the author quotes Lefebvre and others who have talked about the everydayness of life. And the author quotes Lefebvre's view that the critique of everyday life needs to be approached as an act of rehabilitating everyday life as the essential ground of human existence. And the author takes a without essentializing the community, without disrespecting the community, and without rendering the community voiceless. So that's what she author quotes Lefebvre, who writes that the critique of everyday life needs to be approached as an act of rehabilitating everyday life as the essential ground of human existence. And also that those experiences of Muslim women in their very seemingly humdrum existences of their doing the household work, of enjoying moments of leisure, etc. So this is what the author writes about. And also how the everyday is shaped by the structural violence of the state. That has also been done. Just a note of critique here is that a lot of the testimonies of Muslim women could have been fleshed out. So, for example, on the second page of chapter 2, we get one-line testimonies from many Muslim girls. But I'll read them out. I like cooking rotis. I make almost 50 in a day. They are perfect. I like trying out new dishes to cook. I like to go for my tailoring class. I like talking to my elder sister. So instead of giving us fragments of testimonies, maybe this is maybe a methodological critique. So that we can get a better idea of these Muslim women who are speaking in this book, through this book. You could have had a better and a more fulsome image of what they are and of their subjectivities instead of fragmented testimonies. But then she goes on to write about, the author talks about the agency of Muslim women, and that is something which social science literature has had a debate between structure and agency about what is the structure which defines the scope of human activities and the agency per se of individual actors acting within their everyday contexts. And it is from this debate which the author tries to locate vis-a-vis Muslim women. And she also goes on to say how the structures of violence also affect the everyday existence of Muslim women. I'm sorry. So that the basic, there is a lot to be said, but since I have to sum up now, one of the basic empathetic themes of this book, which makes this book a very essential read for people in the social sciences, is that the way this book tries to etch out
the life cycle or the everyday context of Muslim women outside the caricatures and stereotypes which govern them. Having said that, I would also like to point out that recent literature, such as this book or other books, Hilal Ahmad Muslims comes to mind. One of the aims of these books has been to explode the myth of an essentialized singular identity of Muslims, Muslim men, Muslim women. And while that is a very laudable aim for any social science literature, but the reason why that is done is because it is the state. It is the state which constructs, and it is also the public academia which constructs a certain image, a certain essentialized stereotypical image of Muslims. And of course, in order to flesh out the existence of Muslims outside these essentialized images, in order to show Muslims as living, breathing individuals outside these essentialized images, we need accounts and narratives over there. But there is also something else. There is also a certain commonality. I'm deliberately not using the word essentiality. I'm deliberately not using the word singularity, but something common, which can, the reason why, if there is an attack on Muslim women in schools in Karnataka, if there is discrimination against them, if there is aggression against them, Muslim girls and Muslim women in other parts of the country, in other parts of India, also feel threatened, and they also feel solidarity, and this has to be taken into account. So any anti-essentialist literature needs to take into account what are the common elements of Muslim identity without falling to the same old traps of stereotypes and essentialism. And the reason why I am putting forward this suggestion is, I'll just narrate a small anecdote and I will end there, is my mother teaches in a school in a Basti in Howrah in West Bengal. It is about 10 kilometers from Calcutta. And 2 days ago, there was a one-act play performed by school students from class 8 or 9 for the outgoing class 10 batch. They were giving a farewell to these girls. So I have been to this school in which my mother goes, and my mother teaches. And the infrastructure is not very good. It is that school, if you visit it, it suffers from all those structural deprivations, which can actually give a critique to the system in West Bengal or India as a whole. The reason why I'm pointing out this episode to my listeners here is that this one act play as part of the farewell program was on hijab, and the title of this play was Why We Support Hijab. And I didn't go to the farewell program, but I saw a video of it. And in that, a group of girls, they enact most of the episodes of what happened in Karnataka. Basically, the exclusion of Muslim girls from Karnataka, where the gates were shut upon their faces, the declaration of the government order, which prohibited them. And also the fact that Muslim girls were protesting for their right to enter schools, irrespective of whether they're wearing the hijab or not. So it was, the reason why I was surprised by this is because maybe if I were in school, I wouldn't have been aware, when I was in class 9 or class 10 back in school, I wouldn't have been aware of what is happening elsewhere in the country to my counterparts elsewhere in the country. But people are aware today. Girls are aware today. And this is what is extremely important, because the way Muslim youngsters are getting a degree of political awareness, which was not at all present earlier. It was unprecedented. I'm talking about Muslim girls, Muslim school girls. And that is something which we need to take into account when we talk about Muslim subjectivity and when we talk about Muslim identity, that even though we don't want to repeat the stereotypical casting of Muslims, when we write our narratives about Muslims, we have to take into account the commonalities which exist, the solidarities which exist between Muslims, and which I'm sure will grow further, because there is no end to the patterns of anti-Muslim violence which are existing in India today. So thank you. Thanks. I'm sorry for any technical errors and for any
connectivity Thank you so much. issues. Thank you so much. Thank you so much, Heba Ahmad, for sharing your wonderful thoughts and remarks on the book. अब हम दरखास्त करेंगे डॉक्टर परवेज आलम साहब से, who is the Assistant Professor of Political Science in Aligarh Muslim University. डॉक्टर परवेज आलम साहब भी हमारे लिए किसी मोहताज के तारुफ नहीं है. He is a great academician, he is a great scholar. तो अब बिना वक्त को वेस्ट किए, I would like to request him to please share his views, his thoughts on the book. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा SIO को कि जिसने इतनी बेहतरीन बुक को इस डिस्कशन सीरीज का पार्ट बनाया। साथ ही साथ गजाला जमील साहिबा को, जिन्होंने ऑलमोस्ट 10 इयर्स का जो एक वक्फा है उसको इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से, और सबसे बड़ी बात ये कि इतनी ऑनेस्टी से इस काम को अंजाम दिया, उसके लिए वो मुबारकबाद मुस्तहिक है। अब देखिए, इस किताब के बारे में मुसाब साहब ने और हेबा साहिबा ने बड़ी मजीद तरीके से सब कुछ आपके सामने रख दिया है। दो चार बातें जो मेरे जहन में आ रही हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन 2002 में कायम हुई और जो ज़किया सुमान साहिबा है, उन्होंने गजाला साहिबा को बोला कि आप ये प्रोजेक्ट लीजिए, और कुछ अहम सवाल थे। 2002 के दंगे के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आया, और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक एथनोग्राफिक स्टडी है ऑर्गेनाइजेशन, फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो सिल्विया वतूब की है, जो आवाज़े निस्वा जो ऑर्गेनाइजेशन था, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो पैटर्न था वो दरअसल कोलैबोरेशन की बात थी उसमें, कि जो प्रिवेलिंग फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर। अगर आप किताब के शुरू में देखेंगे, इंट्रोडक्शन में, तो बहुत अहम सवाल 2012 के निर्भया रेप केस के बाद जो मूवमेंट्स चले, उसमें गजाला साहिबा ने उठाया दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक वर्कशॉप में, जिसमें उनकी बहस हुई, और जो एक ओवर आर्चिंग जो एक पैटर्न है फेमिनिस्ट मूवमेंट का, जिसमें सारी बातें हुई कि इनविजिबलाइजेशन की बात हो, या एक जो गेज है, फेमिनिस्ट गेज है, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी इन जनरल को इरैशनल और एंटी लिबरल करार दिया जाता है। एक एकेडमिशियन ने बहुत जेन्युइन सवाल उठाया और उसके ऊपर चार्ज लगाया गया कि वो कंफ्यूज्ड है और मिसलीड कर रही है। और जो दूसरे चार्जेस थे वो ये कि शी इज फेलिंग टू अंडरस्टैंड द इशू एट हैंड। तो भाई, इशू को अंडरस्टैंड कौन करेगा? कोई मोनोपोली तो है नहीं कि आपकी जो समझदारी है वही समझदारी सबकी हो। तो ये एक एंजाइटी है, और इस पूरे किताब के दरमियान ये जो एंजाइटी है वो झलक रही है। और इसलिए मैं मानता हूं कि इस किताब की लॉन्ग लाइफ है, and this book is going to pave the way for further research in academic world with different methodology। जिसको मुसाब साहब ने बोला कि जो नैरेटिव मेथड है, एक जो ऑब्जेक्टिविटी, पॉजिटिविज्म और जो न्यूट्रल स्टैटिस्टिक्स से भरी हुई जो स्टडीज हैं, जो आपको जो ग्राउंड पे जो रियलिटी थी, जो सोशल रियलिटी थी, उसको स्ट्रक्चर रिपोर्ट और
जो मुस्लिम विमेन सर्वे है जो जोया हसन और रितु मेनन साहिबा ने किया, उसने जो ग्राउंड रियलिटी थी उससे बहुत अलहदा कोई बात नहीं करी, बल्कि उस चीज को अटेस्ट किया जो ग्राउंड रियलिटी थी। लेकिन जब आप स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो क्या हर एक चीज एम्पिरिकली पढ़ी जा सकती है? ये एक बहुत अहम सवाल है। और जो नैरेटिव मेथड के जरिए, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के जरिए, फोटो लैंग्वेज के जरिए जो आप इस किताब को पढ़ेंगे और इसमें जो स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, तो आपको ये एहसास होगा कि वो स्टेटमेंट्स भी अपने आप में एक डेटा है। और एक जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था इस किताब को पढ़ने के दौरान, वो ये था कि मुझे बहुत लंबे लंबे पॉज लेने पड़े। और वो पॉज इसलिए कि जो ये अकाउंट्स हैं वो बहुत हार्ट रेंचिंग थे। चाहे वो मुंब्रा की स्टोरी हो या सब्रकांठा और अहमदाबाद की हो, या आपके राजस्थान की हो, तमाम जो नैरेटिव्स में जो यंग मुस्लिम वुमेन, जो 15 से 25 साल की उम्र की जो लड़कियां और औरतें हैं, उनकी बातें जो है वो झकझोर देने वाली थी। ऐसी किताब पार्टीशन लिटरेचर में आपको मिलेगी जहां पे आप उर्वशी बुटालिया के अदर साइड ऑफ साइलेंस को पढ़ेंगे, या बाकी जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में क्या होता है, जो एक एथनोग्राफिक जो स्टडी होती है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो नैरेटिव मेथड के जरिए एक क्रिटिक किया गया है, जो प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज है, वो प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज किस तरीके से उसकी एक मार्केट है, और किस तरीके से वो जो कॉमन सेंस है, उस कॉमन सेंस को क्वेश्चन करने के बजाय उसको सपोर्ट कर रहा है। और इसलिए आप इस बुक में देखेंगे कि एडवर्ड सईद ने जो फ्रेमवर्क दिया ओरिएंटलिज्म के जरिए, किस तरीके से ओरिएंट्स को एक डीह्यूमनाइज्ड और डिबेस्ड सेल्फ में कन्वर्ट कर दिया गया, वो ओरिएंटलिज्म कैरी फॉरवर्ड करता है हमारे इंडियन एकेडमिक वर्ल्ड में भी। और इस किताब में लिटरेचर रिव्यू के जरिए ये साफ बताया गया है। वो क्या चीजें मिलती हैं? जो पोर्ट्रेयल ऑफ मुस्लिम्स है उनको इंटॉलरेंट, सेंसुअल और वायलेंट, और ये कॉमन पार्लांस में है। ये जो आपका जो पब्लिक स्फीयर है उसमें ये सारी चीजें आर्टिकुलेट होती हैं। और जो मेजर थीम है जो इंडियन एकेडमिया का, जो लिटरेचर में खास करके मुस्लिम्स पे जब काम होता है, तो कम्युनल रिलेशंस और वायलेंस का जो ओवर प्रोडक्शन है। और इसलिए जो शुरुआत की किताब में जो बुनियादी बातें हैं, जो बुनियादी सवाल हैं, उन्होंने ये बात उठाया है कि क्या
कम्युनल रिलेशंस और वायलेंस के अलावा मुसलमानों की कोई अपनी एजेंसी नहीं है, कोई अपनी बात नहीं है? क्या उनकी जिंदगी में किसी तरीके का कोई और बातें नहीं है? और जो एक कॉमन नैरेटिव है, बीइंग मुस्लिम इन इंडिया मींस फॉरेन, और लिहाजा एंटी लिबरल और इंटॉलरेंट वगैरह तो बात है। हिंदू होने का मतलब है कि आप ओरिजिनल है, आप नेचुरल है, और आप बाय डिफॉल्ट सेक्युलर है। और सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन के जरिए जो मुसलमानों का पोर्ट्रेयल एक अदर के सेंस में हुआ है, जो अदराइजेशन सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन में हो रहा है, उसमें आपको डिसलॉयल, जो लॉयल्टी का सवाल उठता रहता है देश के गद्दारों को, नॉट कमिटेड टू द कॉज ऑफ नेशन, एंटी नेशनल है। और एक जो रिकरिंग पैटर्न है सिनेमैटिक प्रोडक्शन का, उसमें पार्टीशन, चाहे वो गदर का जिक्र किया है या बाकी और भी पार्टीशन बेस्ड जितनी भी मूवीज हैं, उसमें आप देखेंगे कि मुस्लिम पाकिस्तान का क्रिएशन एक रिकरिंग पैटर्न है। एंड दिस इज ऑल्सो रिमाइंडर ऑफ द existence of Muslims in India at the mercy of the majoritarian ideology or majoritarian society. इसमें 1962 जबलपुर रॉयट का जिक्र किया गया है, जो मेरे लिहाज से एक वाटरशेड मोमेंट है इंडियन रिपब्लिक ऑफ वायलेंस, मैं इसको कहता हूं, जिसमें 1962 में जवाहरलाल नेहरू है स्टिल किकिंग, सेक्युलर पॉलिटिक्स फैशन में है, एंड वायलेंस, communal violence particularly, is going to be the defining feature of the Indian politics in future since 1962. अर्बन स्पेस और वायलेंस के बारे में जो जिक्र है इस किताब के अंदर, और इसमें एक जो अहम सवाल पूछा गया है अर्बन स्पेस और वायलेंस के बारे में, मेरा सवाल गजाला जमील साहिबा से है कि क्या हम इसको पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंगल से भी देख सकते हैं, अर्बन स्पेस और वायलेंस को? क्योंकि अहमदाबाद में, गुजरात में खास करके, और दीगर मुरादाबाद हो, अलीगढ़ हो या दिल्ली हो, ये जितने भी अर्बन स्पेस हैं, वहां पे वायलेंस के पीछे जो एक खास वजूहात जो नजर आती है, क्या वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक है? और एक और जो अहम बात ये आ रही है कि इंडिया में दलित कम्युनिटीज के हवाले से, कि जो दलित स्टडीज है, चाहे आप अम्बेडकराइट जो पूरा एक एकेडमिक वर्ल्ड है, उसमें आप ये देखेंगे, और खास करके गोपाल गुरु का जिक्र है इसमें, जिसमें ये बात कही जा रही है कि थियराइजेशन हमारे यहाँ नहीं है, और ये एंजाइटी है, बहुत जेन्युइन है। तो थियरी जो है वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे, जहां पे एजेंसी को रिस्टोर किया जाए, और खास करके पावरलेस कम्युनिटीज जो माइनॉरिटी। In 5 minutes, please. 5 minutes. अच्छा, तो मेरा तो अभी 10 मिनट भी नहीं हुआ साहब, आप आधा घंटा सब लोग बोले हैं। खैर, अच्छा, नहीं 20 minutes. नहीं, आप जो है ऑर्गेनाइजर हैं, आप
जो बोलेंगे वही होगा। तो थियराइजेशन रिजल्ट्स इन इमेंसिपेटरी ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिटिकल प्रोजेक्ट। जो हिंदुस्तान के अंदर जो एक इंस्टीट्यूशनलाइज राइट सिस्टम है जो पॉल ब्रास के काम में आता है, उसमें हम देखते हैं कि वायलेंस के स्टेजेस हैं और ज्यादातर काम जो वायलेंस के ऊपर, कम्युनल वायलेंस के ऊपर हुआ है, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये स्पॉन्टेनियस वायलेंस है। लेकिन जब हम पॉल ब्रास का जो हिंदू मुस्लिम रिप्रोडक्शन ऑफ जो ये वायलेंस देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस, उसमें हम देखते हैं कि बहुत एक कंसर्टेड एफर्ट के साथ जो एक वायलेंस को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और उसके पीछे क्या जस्टिफिकेशन है, और जो एक जर्नलिस्ट और एक जो पूरे मीडिया है वो किस तरीके से वो पूरे वायलेंस के उस सीन को जो मेमोरी से खत्म कर देती है और उसको ट्रिवियलाइज कर देती है। तो स्टीरियोटाइप जो सेक्लूजन और पर्दा प्रैक्टिसेस के ऊपर जो बात कही गई है, और ये कहा गया है कि मुस्लिम वुमेन वर नॉट सीन, हेंस दे वर नॉट टॉक्ड अबाउट। क्योंकि पर्दा है और इसलिए they were not seen, hence they were not talked about. Muslim women are victims of Islam, and women is produced and reproduced in literature and discourses. आप सच्चर रिपोर्ट और मुस्लिम वुमेन सर्वे जो है वो बहुत रिडेम्पटिव और कैथार्टिक था। वो इसलिए क्योंकि सिविल सोसाइटी में एक पर्पसफुल डिबेट इमर्ज हुआ और जो तमाम स्टडीज थी जहां पे इसेंशियलाइजेशन हो रहा था जो मुस्लिम कम्युनिटी इन जनरल और मुस्लिम विमेन इन पर्टिकुलर का जो एक्सपीरियंसेस और एटीट्यूड्स थे, उसमें इसेंशियलाइजेशन में ये देखा गया कि उनको लैगार्ड कम्युनिटी बोला गया, स्लो है, लेथार्जिक है, प्रोग्रेस को लेकर के बहुत कंसर्न नहीं है, और इस तरीके से प्रोफाइलिंग हो गई। और ये प्रोफाइलिंग जो है, ये जो इसेंशियलाइजेशन है, ये डिसीजन मेकर्स का भी है, पॉलिसी मेकर्स का भी है, जजेस का भी है, लेजिस्लेटर्स का भी। Last 40 years that what we are also witnessing is that there is overdoing and overproduction of Shahbanu and Rushdie affairs just to showcase anti-liberal attitudes of Muslims. Right and left, जैसा कि हिबा कह रही थी, right and left converge on chastising Muslims as irrational and anti-liberal. और जो मुस्लिम्स को एक मोनोलिथिक कैटेगरी के तौर पे जो देखा जाता है, मुस्लिम विद इन मुस्लिम जो तमाम डाइवर्सिटी है उसको ढक दिया जाता है। और ये बात राजमोहन गांधी के अंडरस्टैंडिंग द मुस्लिम माइंड को लेकर के ये बात कही गई है कि किस तरीके से साइकोपैथोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट है जहां पे मुस्लिम को एक फ्रेम में देखा जाता है, मोनोलिथिक कैटेगरी के तौर पे। और ये बात भी है कि इस्लाम जिस कॉन्टेक्स्ट में आया और इस्लाम के क्या मिशन थे, जो रिवोल्यूशनरी जो उसके जो मिशन थे, उसमें भी तमाम तरमीम हुई है और वो जो है बहुत हद तक चीजें बदल चुकी हैं। और जो नैरेटिव मेथड है उसमें जो एक खास चीज वो आ रही है कि किस तरीके से lack of voice, lack of will to listen to Muslim women particularly, and hence narrative method need to be applied to listen to their voices. So here again the very important question is what is the intent of the researcher?
And one very important finding through this reading is, through the research, of course, is that breaking down and weeping has been a kind of articulation, and it has been recognized in this research that there is also a vocabulary of grief. The private and collective memory, when it is reminded, the participants have been sobbing and crying, and they have been crying even when the researchers were not actually going there to talk about their experiences. And in fact, crying and silence are also speech acts that this work talks about. This work is really path-breaking in terms of the kind of literature, एक ज़ख़ीरा है जो इसमें जिस तरीके की लिटरेचर को यहाँ पे लाया गया है, एलियनेशन का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से पॉवर्टी और जो कम्युनल प्रेजुडिस है सोसाइटी के अंदर, जो स्टीरियोटाइप है, वो एलियनेट करता है और जो मार्जिनलाइजेशन में उसको और फर्दर करता है. और एवरीडे लाइफ जो है इज द स्पेस वेयर चेंज इज अंडरस्टूड. चेंज को आप अंडरस्टैंड अगर करना चाहते हैं तो एवरीडे लाइफ में देखना पड़ेगा. अब मेरा सवाल है, दूसरा सवाल जो है वो ये है कि क्या हम इसको रिलेटिव डिप्रिवेशन थियरी जो खास करके सोशल मूवमेंट्स में पढ़ी जाती है, क्या उसको यहाँ पे लेकर के चीजों को देख सकते हैं रिलेटिव डिप्रिवेशन के जरिए? तो मैं 4-5 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा. लाइकिंग और डिसलाइकिंग के बारे में, कि जो लेबर है और यहीं से जो एलिनेशन का पूरा प्रोसेस शुरू होता है, कि क्या जो वर्क ऑफ लेबर है, जो औरत है, जो यंग मुस्लिम वुमेन है, क्या वो अपने लेबर को एंजॉय करती हैं, और जो ये पूरा प्रोसेस है जो वर्क कल्चर का, उसमें अगर रिक्रिएशन नहीं है और लेजर नहीं है तो इसका मतलब एलियनेशन होना ही है. और ये तमाम जो चीजें हैं एक तरीके के स्ट्रक्चर ऑफ वायलेंस जो है वो पैदा करती हैं, और ये स्ट्रक्चर और वायलेंस का हिस्सा हो जाती हैं विद इन द कम्युनिटी एज वेल एज फ्रॉम द आउटसाइड. एंड देन this actually leads to the spiritual death. You know, a person who is bereft of the dignity of the self, that means a person is living as an animal existence. So studying every day means possibility of providing details of what is familiar but not necessarily known. Routine and ritual, festivity, delight, pain and suffering are the accounts of every day. So every day, in a sense, resists total organization and control. And every day is the site of uneven development. Every day is the site of enforcement and encroachment by the private, shrinking further the space for public within it. And the individualization of everyday private space must be revisited. So यहाँ पे बात कही गई कि everyday life of young Muslim women are trapped by the stereotype of the so-called tyrannical Islamic monolith enmeshed in mainstream popular culture. तो यहाँ पे फिर मेरा सवाल ये है कि can these tactics, जो मुसाब साहब भी बात कर रहे थे, can these tactics, जो makeshift creativity है, जो talking, reading, cooking, shopping etc, का जो सरतीव बात करते हैं, can these tactics be called coping mechanism? So
एक बहुत बहुत बढ़िया जिसको कोट किया जा सकता है वो बात आ रही है कि sometimes just continuing to live is an act of resistance. तो ये तमाम स्ट्रक्चरल वायलेंस, डायरेक्ट वायलेंस, कल्चरल वायलेंस, ये तमाम होते हुए भी एक तरीके का रेजिस्टेंस है जो 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 हिंदुत्व मेजॉरिटेरियन जो आइडियोलॉजी है, जो एक पूरा विक्टिमाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो वायलेंस का जो एक्ट है, इसके खिलाफ, इसके ऑपोजिट में जो just continuing to live is an act of resistance. और इस हवाले से जी 2 minutes प्लीज। ओके, तो इसमें एजेंसी और जो स्ट्रक्चरेशन का जो डिस्कशन है, जो एजेंसी एनेबल करती है सेल्फ डेवलपमेंट में, एडेप्टेशन में, जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो एक तरीके से हमारी एक रिफ्लेक्सिविटी जो होती है, जहां पे हमारा जो हम सब जो है वो डिफाई करते हैं और अल्टर करते हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो कुल मिलाजुला करके जो हमारा पब्लिक स्फीयर है, जहां पे डोमिनेंट डिस्कोर्स अंडरमाइन करते हैं और एक यूनिफाइड पब्लिक स्फीयर बनाते हैं, उसके बिल्कुल अपोजिट में काउंटर पब्लिक्स की जरूरत है। और जब तक हम कम्युनिटी के नीड्स और एस्पिरेशंस और ड्रीम्स को नहीं समझेंगे, और ये बात पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस से आ रही है कि ये बहुत जरूरत है कि हम कम्युनिटी के, खास करके यंग मुस्लिम विमेन के नीड्स, ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को समझें, उनकी जो जरूरियात की चीजें हैं उसको समझें, क्योंकि ये सब कुछ डिनाई हो रहा है। आपके डिनाइल ऑफ बेसिक सिविक एमिनिटीज जो है, जो पूरा का पूरा एक सेग्रीगेशन और गेटवाइजेशन जो इस किताब में खास करके नैरेटिव्स में जो विमेन है, किस तरीके से अगर आप कॉल टू चेंज देखेंगे तो उसमें भी आपको ये मिलेगा कि एक रिकरिंग पैटर्न है कि सब एजुकेशन चाहती हैं, सारी बच्चियां और औरतें ये कह रही हैं कि हमें एजुकेशन की जरूरत है। तो ये जो प्राइमरी बेसिक नीड्स जो है वो उनकी फुलफिल नहीं हो पा रही है। वो गवर्नमेंट से क्या चाहती हैं, स्टेट से क्या चाहती हैं, और उसमें वो चाहती हैं सिक्योरिटी, वो चाहती हैं कि उनके कम्युनिटी को जो है वो हिकारत भरी नजर से न देखना। तो ये तमाम बातें जो है इस किताब में आती हैं, और मैं समझता हूँ कि ये एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट के तौर पे भी इसका इस्तेमाल होना चाहिए। और इसके ऊपर 15 से 25 साल की उम्र के औरतों को जब स्टडी किया गया है, तो इसको और आगे 25 से 35 या 25 से 50 के औरतों के क्या जरूरत की चीजें हैं, या फिर मुस्लिम कम्युनिटी इन जनरल, इस नैरेटिव मेथड को अप्लाई करके हम फर्दर स्टडी अगर करेंगे तो एक थियराइजेशन में भी हमारे जो एक एंजाइटी है वो मदद मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि इस किताब को पढ़ने के बाद जो स्कॉलर्स हैं वो मोटिवेट होंगे फर्दर रिसर्च के लिए, और कम्युनिटी के जो एस्पिरेशंस और जो नीड्स हैं उसको लेकर के कंसर्न होंगे और कॉन्शियस होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, जज़ाकमुल्लाह खैरन। जनाब परवेज आलम साहब, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने किताब के मुख्तलिफ पहलुओं को डिस्कस किया और सवालात उठाए। अब हम गुजारिश करेंगे बहुत ही अदब के साथ रहमतुन्निसा साहबा से कि आप जो है वो इस किताब के हवाले से अपने कमेंट्स, अपने रिमार्क्स, अपने थॉट्स शेयर करें। सो प्लीज रहमतुन्निसा साहबा। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन।
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. First of all, I would like to congratulate Professor Ghazala Jamil for bringing up such a wonderful work, taking years. It was not an easy task, and she herself explains all the challenges that she faced in the book itself. So congratulations to you. May Allah bless you and accept it as a good deed from you, and we expect more such works from you. Hopefully we will be able to see more such works from you. May God bless you. And also I would like to appreciate SIO, Students Islamic Organization of India, for conducting these series of book reviews and also selecting this book particularly. And actually, at least the SIO of India, the men belonging to SIO are not against women scholars. You have proved it, and that is really great. May Allah bless you. The book is unique in many ways, as most of the previous speakers have already told. It is talking about the more real aspects of life, not much into the theoretical aspect, and down to earth. And we can say for the first time, such representation or space has been given to Muslim women, that to ordinary Muslim women in the academia or in the research field, where their voice was heard. That is something really great. And as the author herself says, everyone talks about the backwardness of Muslim women, but not many talk about why it happened. The question why was always missing in all those has been missing in all these discourses and discussions. People talk about the problems and immediately they arrive at the solutions which the liberals or the feminists put forward. And they put the blame on the Islam and Muslim, and wash their hands and go. But here we see a balanced representation of an identification of the problems, even though it's not at all prejudiced. If there are problems within the Muslim community, that also has been brought out. And I know, as we all know, Ghazala Jamil is always very bold to talk what is the reality and the truth. And she has given it very clearly in the book. And also the other side of the coin, which people usually don't want to talk about, that is being talked about. The author's experiences in general public discourses, she cites some instances. I was able to relate myself very well with that. 2 years back in Delhi, there was a book release program, and there was a talk on a published book, and it was about a gully in Delhi itself. And, the talk was mostly on the backward condition of the women, Muslim women, because of the patriarchal system and Islam and Parda, and how they are, able to, they are being saved by some NGOs and all. The discussion, nowhere the author or the other speakers touched on why that those women in that gully, what is the reason behind that? Is there any history behind that? What is the historical, reasons behind that? So I stood up and asked this question, and neither the author nor any of the speakers who spoke on that day, they were able to give me a clear answer. But Alhamdulillah, one man, gentleman from the audience stood up and he said, I will tell you the reason, okay? He gave the historical reasons for this, backwardness of Muslim women. It's not just Muslim women, the entire Muslim community is backward, okay? He was able to give a clarification. So all these happen, very often, and we face situations very often. So I myself and maybe many of you people who are listening must have been able to relate to this. And the title, Muslim Women Speak. The word speak is really, a very catchy word, and, especially a bold, I should say, word, because in our present situation, Muslim women are not supposed to speak.
We feel that within the community, there are this fiqh discussions going on, discourses are there, whether the voice is, to be heard outside or not. Such discourses are going on. But otherwise also, if at all a Muslim woman is bold enough to stand up and speak, that is being not accepted, and that is being, people raise their eyebrows on that. That is not being something expected of her to do that. So speaking and making them speak, that is what they did. The researchers, and under the leadership of Professor Ghazala Jamil, what they did, the greatest achievement of this work is that they made the young women speak of their dreams, their aspirations, their problems, and also their, what they want to tell the state, the government, the Muslim community themselves on how they can bring out the change. That is something really great. I don't want to, go into the details of the book too much, because already we have already listened enough about that. Ghazala Jamil actually emphasizes on the communal questions, and she says that it cannot be separated from Muslim women's questions in India. They are closely related, and the fact of global Islamophobia, it has to be factored as well. So there are separately, there are no problems only for Muslim women, and they are related to the communal and the Islamophobic situation that is being created. So that also has to be gone into that. And she, in the introduction itself, she explains regarding the method and the approach that she has selected through interviews and workshops, how the girls were made to, the young women were made to talk about their problems. And I like the way the author stressed on the importance of assessment of, realities, even if it is pessimistic, to enthuse for resistance, action, and practice, quoting her own words. And also the everyday of inhabiting margins. Under that chapter 4, already the other speakers also have given, shared their views. There she talks about the living realities of every day, and the discriminations faced, inflicted on, and the experience by Muslims in India, limited access to public welfare system, and low representation and participation in political affairs, public matters and jobs, and spatial exclusion, and even the structured violence with a communal color. And she talks about the structured violence in detail, and how it affects, and how it goes for a long time. The impact is not just during the violence, and the impact is there. It is getting prolonged, and the impact is there, continues for years. Even now in the 20 years, after 20 years in Gujarat, the impact is being felt. And now so many, when, on the verge of this 20 years of this program, a lot of, studies are coming out on how the impact is still there, and how people are, being affected. And this chapter 5, is the chapter which I like the most in this book, that is talking about the dreaming, in shackles. And Professor Ghazala Jamil says that it is our, desires that bring to us the motivation to work. Yes, if our community and our youngsters, especially our young girls, are motivated to dream, if we, evoke them, or motivate them, or inspire them to dream regarding their future, definitely changes will come in the community. So they may be extended the courtesy of acknowledging the hard work involved in continuing to nurture small and noble dreams. That is what Ghazala Jamil talks about. So it's really very important. And then she talks about, towards the end, the call for change. In chapter 10, she talks about, the aim of this discourse, gaining equal opportunities and the recognition of full humanity for Muslim women, getting education, economic betterment,
and a capacity to dream and create lives in the likeness of their dreams. So, as a conclusion, or, what I would like to, comment on the book is that, of course, the book talks about, the realities, the problems Muslim women are facing. But, there are success stories also. There are, throughout the history, there are stories of resistance and stories of success, achievements, which women, Muslim women were able to do. Especially I belong to the state of Kerala, and coming from the state of Kerala, there are so many such stories in the history of Kerala and many other states also. So that having got, maybe that would have been an inspiration for the reader. So the other side of the coin, how if we are ready to resist within our parda, within the Islamic, faith, standing strong, holding on to the Quran and Sunnah itself. If we are ready to, articulate our rights, if we are ready to resist, if we are ready to speak out and stand for their rights, definitely we will be able to achieve to some extent. There are success stories, I think, that should also have, found a place, or, maybe in future, in other works it will come. And also Indian Muslim women's history, maybe we can mark it, before anti-CAA movements and after anti-CAA movement, these Shaheen Baghs, that is a breakthrough for Indian Muslim women, especially our young girls. So many hijab clad women, nikah pehne women, or, those who are in the black parda, covering their face, they were able to stand up and, talk to the media and tell them regarding the constitution. They were able to interpret what rights they have in the constitution, their constitutional rights and the legal rights. And they were able to assert, and they were very, the voice was very loud and clear, and it was very well appreciated, at global level also. And I think that has given a confidence to the Muslim women and young women in India now. So I think further studies are to be done in this regard, and how it has impacted our rural life also, these gullies also. And also, during the lockdown, during COVID and during the lockdown, this online, programs and activism has increased. And in that also now, Muslim women are coming to the forefront, and more visibility is seen of Muslim women through these, new media, even though the general media always ignores Muslim women's voices and they don't talk about Muslim women, only when there is a problem and only when they can, brand them as terrorists, or when such. Except for such instances, usually they don't get a chance to speak or voice their, problems and concerns. But now, using the new media, social media, we call it, our new generation media, a lot of Muslim women, you see at night, you go to the Twitter spaces or any media, YouTube channels, a lot of Muslim women, even from the rural, backgrounds, 11th class, 10th class, 8th class girls, they are able to articulate, talk about their dreams and their aspirations. So how that is having an impact on, in our society, Muslim women, that also I think needs further studies. And, I think in these ways, I think we need to motivate our girls, our youngsters, and show them the way on how, if there is no, if the general media is not, giving you chance, there are these possibilities, or, you for education also now. A lot of course, the government should take into consideration legally, we need to fight, but at the same time, there are many online courses, today also I went to Simapuri and I met with some young women, and they were talking about some, online courses they are doing. Ordinary women, 8th class dropouts, 10th class dropouts, and now they are being motivated to go for such, continuing education.
And all these things are, going on. So I think here also we need to have further studies, and maybe Professor Ghazala Jamil can take it up and see how we can, we need to give them solutions and, chances and to grow and flourish. So in short, what I would like to say, one may not agree with all the arguments that was being put forth by Professor Ghazala Jamil out of what she has, through her research, out of her findings. But the book definitely is a must-read book for any, person, or any, socially aware person, or the heads of NGOs, Muslim organizations, those who want to do something to uplift and empower the Muslim women. Actually, I have read it once, and I have marked certain areas, and I need to again go through it. I think one time reading is not enough for this book. You need to go through it again and again, refer back to the book so that you will get more insight on practical, planning and programs, designing programs, activities on how we can bring change in our women folk, and through them the entire community, and through them the entire nation. So may Allah bless Professor Ghazala Jamil and all of you, those who are listening. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much, Rahmatunnisa Sahaba, for sharing your wonderful thoughts, your valuable remarks with us. It's time to go and listen to Ghazala Jamil. लेकिन उससे पहले मुझको भी किताब पढ़ने का मौका मिला, बहुत अच्छी लगी, और कुछ हमारे भी सवालात थे, लेकिन अब चूंकि वक्त नहीं है तो सिर्फ एक सवाल अपना ऐड करते हुए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्रोफेसर ग़ज़ाला जमील टू टेक द फ्लोर. सवाल मेरा बहुत पार्टिकुलरली फेमिनिज्म के नोशन के साथ था. तो फेमिनिज्म का नोशन, इस पे आपने भी इशारा किया कि ये एक बहुत ही पार्टिकुलर यूरोपियन सोशल कॉन्टेक्स्ट का जो है वो आउटकम था या उसका डेवलपमेंट था. और इसके हवाले से फिर बाद में जो डिफरेंट लिटरेचर का मुताला करो तो ऐसा लगता है कि यूरोप के बाहर जहां भी वीमेन एम्पावरमेंट के टेंडेंसीज रही या मूवमेंट्स उठी या वर्क हुए, वहां भी लोगों ने वीमेन एम्पावरमेंट को तो पूरा सपोर्ट किया, लेकिन फेमिनिज्म के साथ फेमिनिज्म को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया एज ए फिलॉसफी, एज ए नोशन या एज ए कंसेप्ट, क्योंकि उसका एक अपना बैगेज था जो उसके अपनी हिस्ट्री के साथ अटैच था. लेकिन आपकी रीडिंग के हवाले से ऐसा लग रहा है कि एक तरफ आपने क्रिटिसाइज भी किया है हिंदुस्तान के खास पस मंजर में सेकुलर लिबरल फेमिनिज्म को, लेकिन दूसरी तरफ बिटवीन द लाइन्स ऐसा भी लगता है कि अगर फेमिनिज्म कुछ ऐसे मराहिल तय कर ले, जिसके आपने बाद मिसालें दी हैं फिलिस्तीन में या कुछ दूसरी जगह, ऑफ कोर्स मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत सी जगहों पे फेमिनिज्म को बाकायदा उसके नाम के साथ इंडोर्स किया गया, उसकी मूवमेंट्स भी हैं. लेकिन आपका फेमिनिज्म के हवाले से क्या वो एक बहुत ही पार्टिकुलर हिस्टोरिकल कंटेक्चुअल स्पेशल नोशन देखते हुए दूसरी जगहों पे उसको अवॉइड करते हुए अपने कंसेप्ट्स, अपने नोशंस डेवलप करने चाहिए, या फिर ये कि अगर फेमिनिज्म की किसी मखसूस स्पेक्ट्रम या किसी मखसूस वर्जन के साथ अगर ज्यादा मुनासिब मामला लगे तो फेमिनिज्म को इस कंसेप्ट के साथ भी प्रमोट करना या एक्सेप्ट करने को यूड एडवोकेट. तो ये एक बचकाना सा छोटा सा सवाल था. अब हम गुजारिश करेंगे बहुत ही अदब एहतराम के साथ, हमें खुशी है कि ग़ज़ाला जमील साहब हमारे साथ हैं. ग़ज़ाला जमील अभी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं JNU में. इससे पहले भी वो कई दिल्ली के सेंटर्स में और इंस्टीट्यूट्स में तदरीस की खिदमत अंजाम दे चुकी हैं, पढ़ा चुकी हैं, और आपने DU से PhD करी है. तो चूंकि तारुफ लंबा है आपका, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए अब हम डायरेक्ट गुजारिश करेंगे, would request Ghazala Jamil to please share your feedback and thoughts to that. Assalamu alaikum, बहुत शुक्रिया. Thank you to the organizers, the SIO who does this series of book talks, and I think इसी सिलसिले में किसी और book talk के सिलसिले में मेरी बात हुई organizers से, और I have to say that as a Muslim woman, one has to, promote oneself and one's work. So I was able to also introduce my work to SIO. Rahmat Appa ने SIO को credit दिया है, थोड़ा सा credit I think I would also like to share, in making this event happen even. So I think
I mean, what can an author want? I'm really grateful for your engagement, for all the speakers and commentators on the book, Musab, Heba, Parvez, Rahmat Appa. Thank you so much for your really kind words, your generosity. Your recognition means, more than anything else. I think one of the things that when I started working on this project, one of the things was a sense of dissatisfaction, which you all have recognized in my writing about the way Muslims are studied, about the way they are written about. तो एक दिल में एक मुसलमान औरत होने के नाते जब अपने बारे में, या एक मुसलमान इंसान होने के नाते जब अपने बारे में मैं पढ़ती थी एक स्कॉलर की हैसियत से, और जो भी लिटरेचर के साथ में एंगेज करती थी, तो एक सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन रहता था कि ये किस तरह की बात है। और कहीं ना कहीं एक ये भी अंडरस्टैंडिंग और एक फीलिंग थी कि मुस्लिम्स को रिसर्च का जो हम इसेंशियलाइजेशन की बात कर रहे थे, तो वो इसेंशियलाइजेशन एक और भी तरह की इसेंशियलाइजेशन होती है कि आप इसेंशियली एक रिसर्च के सब्जेक्ट हैं। तो मुस्लिम इज ऑलवेज सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, उनके ऊपर रिसर्च होती है, पर मुस्लिम रिसर्चर्स, मुस्लिम राइटर्स जो है वो जो मुस्लिम पोजीशन से लिखते हैं वो बहुत ही रेयर और बहुत ही कम है। और उससे भी ज्यादा रेयर जो है वो ये है कि वो रिकग्नाइज किए जाए कि वो क्रिएटर्स हैं नॉलेज के, वो नॉलेज को भी क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो अपने बारे में हो, चाहे अपने आसपास के समाज के बारे में नॉलेज हो। और फिर एक और लेवल की जो रेयरिटी है, वो रेयरिटी है मुस्लिम एज कंज्यूमर्स ऑफ नॉलेज। तो जो नॉलेज प्रोडक्शन का जो पूरा जिसको परवेज ने भी जिसके बारे में जिक्र किया कि नॉलेज प्रोडक्शन की भी जो एक पॉलिटिक्स होती है, उसमें मुसलमानों के बारे में लिखने वाले लोग, उनके बारे में रिसर्च करने वाले लोग, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, उनके जो पर्सपेक्टिव है उसमें कहीं ये नहीं आता था कि मुस्लिम्स भी इसको पढ़ेंगे। और जब आप उनको रीडर्स और नॉलेज के कंज्यूमर्स की तरह देखते हैं, तो आपको फिर उनकी रिएक्शंस के बारे में भी सोचना पड़ेगा, या फिर आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि what can they do with that knowledge. So whatever, if I pick up a book and I read a book and I think this is interesting, but what can I do with it? Sometimes fiction or other forms of writing can be for pure pleasure of knowledge, the happiness that we get out of just understanding the world a little better, or just understanding something, some insight in life a little better. But I think the idea that Muslims are also consumers of knowledge, they are also readers, they also want to understand their world better, they also want to have knowledge that actually helps them resist better and act and ask for better conditions of life, assert their right. That was something that never existed. So those were the dissatisfactions that I kind of started doing my work with. So this idea of against the grain reading, this kind of purposive disruption of the way in which Muslims are always talked about, was something that was always in my mind. So for me, being an academician is also a form of politics. That activism and academic activities can be separate, they can be combined, but then some activists can be scholarly, but some scholars can also, through their scholarship, undertake certain kind of activism. So the question I think that Musab was asking about, whether this is a sort of template that I made, that this is a way in which Muslims can be studied. Definitely that was template, not in the sense that everybody do this kind of study, but the kind of motivations that one is doing study with,
that we can do this disruptive kind of knowledge production. आजकल जब social media या technological development की बात होती है, तो disruption को एक बहुत powerful creative force की तरह देखा जाता है, where something that is usually done in a set manner, everybody accepts that this is how it is done, but something that disrupts it also forces us to look for other resources which can actually revolutionize the entire way of looking at it. So yes, there was an intent to do something like that, and there was an intent to do political research. Now, on the question of feminism and on the question of methodology of this kind of purposively contrarian study, I think, why feminism is also important it is because of the kind of methodological tools that feminism provides us, which are emancipatory in nature. So it's not just that whether what do we think about women's position in society vis-a-vis men, vis-a-vis other forms of power, and whether all forms of power are masculine or feminine. There can be a lot of debate about all that. But what is true is that the way feminists have gone about studying power structures, whether gendered power structures, but all other power structures, they have done a lot of path-breaking work in terms of providing the tools for recovering agency of women historically. So it is not, in every epoch of history, women have done remarkable things. There's never been a time when a woman did not do something that was remarkable. But the purposive writing out of history of women, when you're writing official accounts, when you're writing history, when you're choosing, because you can't write everything. So you'll always select and say, I'm going to write this, I'm not going to write that. That selection, that curation always left out women. And so to assert that some people, in this case women, but I use it, for example, to talk about narratives of Muslims per se, and within that narratives of Muslim women have been left out of the official account. And therefore, the idea that they cannot speak. So I think for me, that's very important. And I have written in the book that my criticism of certain strands of feminism is not adversarial. It is as if you were to critique something that you would hold dear to yourself in order to make it better. So can there be more inclusive feminisms? Can there be feminisms which are more attentive to realities of certain women? Because it is true. And I think, there might be some misreading here that, I think some criticism of feminist movement has been attributed to me, which I did not intend to do. But even here, there is something about, debates within movements and a spirit of making it better, or I don't know if I should use it, but reforms should not only be within religions. There can be reforms in various other communities of association and so on. So I think if you were to look at global feminist movement, you would see that there has been scathing critique of feminists of difference. Women of color, for example, critiquing, white feminists, scathing critique, or Western feminism has been critiqued by feminists from third world for the way in which they have aided and abetted, imperialist agendas of Western world. Similarly, we see in India, and I do identify as a feminist, we see in India Muslim feminists and Dalit feminists critiquing the upper caste bias or the lack of reflection within Hindu upper caste feminists. But this is not to say that we are going to
throw out the baby with the bath water. So it's in the spirit of critique to strengthen it rather than to actually do it as an enemy or some such. So I think it was very important for me to clarify that. And especially I think, it's also this purposive contrarian tactic is not something which other scholars and other philosophers or theorists have not used. So it's not something that I can claim any innovation in that sense. So it was available, and I have merely picked it up and I have merely used it. I won't go into the discussion of secularism, but I think I've written elsewhere about critiquing secularism to strengthen it rather than to critique it as an evil force and to get rid of it. Because I think I would just stop to say that in India, secularism is a really, an Indian secularism is a really important resource from which one can, and Muslims particularly, can gain a lot of, energy and resource for resistance. To come to more specific questions that commentators have raised, I will say that I think it's not just utilitarian or only a very strategic use of feminism that I deploy. I think there is an emancipatory potential in feminist theorization, in Marxist theorization, which feminists across the world, including Muslim feminists across the world, whether they like the word feminist or they did not like the word feminist, I think is not really the more important debate. For example, take a parallel example. The word Islamophobia is a very important resource for Muslim communities that are in minority across the world as a resource for resistance. But I've been part of scholarly gatherings and conferences and seminars where Muslim scholars themselves have actually said that there are, conceptual problems with the term Islamophobia, and it probably does not do justice to capture all forms of violence that are faced by different kinds of Muslims around the world. So again, I don't have time to go into it, into that debate, but such debates exist. So I think since I feel that I'm also addressing here a gathering of scholar, activist, a hyphen or a slash between the two words, scholar and activist. Therefore, I'm saying it, that concepts or perspectives. So I'm not just talking about groups or organizations that are membership-based, but movements that are not membership-based, or concepts that people draw resources from, whether those resources are related to methodology or whether those resources are related to ways of thinking, ways of critiquing something. So then no such word or no such perspective is perfect. In my own work, I think I've realized that it's always that if we tincture one perspective with something else, it becomes even better. So rather than to say, well, this is completely useless or I'm totally rejecting it, we can actually take good parts of it and use it with good parts of other perspective in combination with each other and see it. And I've been actually critiqued in other works that I've done for using many Western philosophies or theories, sorry, there's a question here. Yes, I'll come to that. So which are Eurocentric or Western centric, and therefore may not be
it has been claimed that therefore they are not useful for India or Indian realities. But I think, again, something that I can't go into detail, but if we look at Edward Said's whole idea of traveling theory, that theory can be made to travel, that it's not something that is completely localized, provincial, and therefore it cannot travel. So something like that. But yes, Musab, your question about using, this whole idea about religion also. I'm not a scholar of religion, so I don't want to hazard and say things that I have little understanding of. What I do understand, that it is probably in some Muslim debates and discourses where we are arguing amongst ourselves about whether, what to do with this idea of diversity and stereotyping. And Heba also raised this question about, yes, there are commonalities too. So there are diversities, yet there is something common. And especially since 9/11, I think there has been a large acceptance and acknowledgement of the fact that there are certain experiences, and especially experiences of being targeted violently by various majoritarian states, that there is some commonality of those experiences. So I hope I have not given an impression that I don't recognize that. And I think if you look at some of my other work, I do constantly emphasize the fact that we need to look at and critique not just state, but two concentrations of power. One is, of course, the modern state, but also capitalism. The way these two concentrations of power work in tandem with each other has to be done. It's not just that you go on about state, and in all your other understanding, you're completely neoliberal, etc., and you don't recognize it. I think that would also be counterproductive, which brings me to the question that Parvez raised about urban space and violence, and whether a political economic perspective would not be useful. Definitely. In fact, just to share with you, but this work, Muslim Women Speak, is actually the first my first work of this length that I did. And of course, it was a really, in terms of the research that actually happened, it was a huge effort, humongous effort, and there was a large team of researchers who were doing it, and I designed the study and I wrote the study, but the research actually was conducted by a large team of women researchers. So, and I did it actually when I was just starting my PhD. So I was doing this in 2008 and 2009, and I was also writing the proposal for my doctoral research in Delhi University. And while I hadn't even started my fieldwork for doctoral research, this study was finished. So the fieldwork and all the data collection was finished, but I continued to write it and chisel it. And you can see the flaws, and many of you have actually pointed out, for example, what I've done with the narratives and the way I curated those and the way I cut them. Some of it has to do with the way the exercises were designed, and some of it has to do with the way I understood, what's the best way of dealing with this humongous amount of, narrative data and how to put it together. Because usually, these kind of narrative studies are done at small scale. And it's only when you're doing survey studies that you could go for a large scale data collection. What is happening here, if you've noticed in the book, is that this is actually a narrative study where a large scale data collection was concerned. So as a younger researcher at that point of time, I think I was really, just playing it by the ear. I didn't have any experience to go by it. If I were to do it now, I would do it much better. There are parts of it that I can see and feel really embarrassed about the flaws in the book. But having said that, it's something that's still close to my heart because of what Parvez also recognized, the kind of things that the girls told us
I just couldn't bear the fact that, nobody will read this thing. So it took me, 2 years, 1 year actually, to do the study, to write the preliminary report, and then, keep developing it. It went to various publishers, numerous rejections, until finally, I found a publisher. Then it took a lot of time to actually publish it. By this time, when all of this happened, I had actually done my PhD. I had finished my PhD, and it was awarded. My PhD has also been published. So the long story is that, especially to share with Parvez, that my doctoral research is actually on spatial segregation of Muslims in Delhi. And that actually employs the political economic perspective to look at spatial segregation of Muslims from various ways. So I really invite you and request you to read that book, and I would really love your comments on that. And yes, on the question about relative deprivation theory, in the other work, my other book is called Accumulation by Segregation. And in that other work, I have actually made as one of the smaller arguments in the book is actually this idea that citizenship in India, and this is, mind you, this particular book, Muslim Women Speak, was actually published in 2018. And my PhD was published in 2017. So the citizenship, the anti-CA, NRC, NPR movement was yet to happen. So when I was writing this, I actually wrote about, from my field experiences in Delhi, I wrote about the fact how citizenship is actually not a status, as in you're not just a member of a political community and that is what citizenship is. It's not also only, as Hannah Arendt famously said, a right to have rights, but it has actually become a resource. It's become a capital that some citizens, even though normatively, constitutionally, everybody is supposed to be equal and everybody is supposed to have equal citizenship, whereas the actual experience of citizenship was of unequal citizenship, and some citizens actually accumulate citizenship in surplus. They experience it and they live it in surplus, whereas there is a deficit of the experience of citizenship, the right to have rights, in deficit, in deprivation for certain citizens, amongst them certainly Dalits and Muslims and maybe some categories of women. So yes, that definitely is extremely valuable frame. To the points that all of you made about things that I haven't addressed or those are not there, I hope you will this is an older work. This is not, we are discussing it today, but it wasn't done now. And so much water has flown under the bridges of communalism, of feminist discourses in India, or the ideas of citizenship of Muslims. So much has happened since 2008, 2009. I think you know this probably better than me. So yes, there are flaws. And to Rahmat Apa, I have actually co-authored with a brilliant young scholar called Khala Zainab, book chapter. There's a book being put together by some feminist scholars on a textbook on gender in India for undergraduate students, and they invited me to write a chapter on Muslim women. And what Khala and I have done is that we have basically written a history of feminists, women's rights, Muslim women's rights movement in India. And it actually, again, using the feminist methods, we excavate the history of Muslim women's struggle for their own rights from colonial times, and then, of course, down the history, what has been
the setbacks of the movement, the strengths in the movement, and the experiences along the line. So we trace that history. Inshallah, it will be published very soon. And then I hope you would, again, read it, engage with it, and critique it. So I'll stop here. Thank you so much. Jazakumullah khairan kaseeran. Thank you so much, Professor Ghazala Jamil. So it was really a great time, wonderful discussion, wonderful session. We enjoyed a lot to having all of you. Thank you so much, all of the speakers who gave your valuable time and discussed this very important book with all of us and shared your thoughts, your views on the book. और बहुत बहुत खास शुक्रिया प्रोफेसर गजाला जमील का कि आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त निकाला, बल्कि उससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया ये बेहतरीन किताब लिखने का, बहुत ही ज़बरदस्त, जिसको पढ़ के हम सबको बहुत मज़ा आया। तो बहुत ही खूबसूरत सेशन रहा हम तमाम लोगों के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हम तमाम लोग इससे भरपूर तरीके से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। यहीं पे हम आज के इस मजलिस को आप तमाम लोगों के बहुत बहुत शुक्रिया के साथ और शुरका के, ऑडियंस के, पार्टिसिपेंट के भी बहुत बहुत शुक्रिया के साथ कि उन्होंने भी इस बुक की अहमियत को समझते हुए अपना कीमती वक्त निकाला और बुक के इस डिस्कशन से लुत्फ़अंदोज़ हुए, मज़ा उठाया। तो अब यहीं पे हम तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ इस सेशन के इख्तिताम का ऐलान करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।